Namaskaram, friends. Let us begin. Two more questions in the series of regular answer writing. This is day 22. So, the question is first, today, objectivity and dedication is the need of the hour in civil services. This is the first question, and you have to justify this statement. And the second question is, what are the circumstances that create suspicion about an officer's integrity? So let's begin with the discussion of first question. This is our Telegram. Uh, this is our QR code for Telegram channel, and if you want to write regular answers, means we are giving two questions every day, and discussion is done in the evening. So please join this group if you are interested in writing the previous year questions, and join only if you will be writing. Otherwise, no need. Okay, so let's begin. In this first question, so first question, see, you have to focus on this phrase, the need of the hour. This phrase, need of the hour, will bring substantial difference if you include that aspect. So this question must be compared with some other type of question. See, if it says that objectivity is needed in civil services, or the question is dedication is needed in civil services, or the question what exactly is asked is today objectivity and dedication is need of the hour. So think in that direction. It is not saying that objectivity is needed in civil services, or dedication is needed, or objectivity and dedication is needed in civil services justify. No, इन जनरल अगर ये क्वेश्चन होता कि व्हाट is it needed or not, or it is needed, you have to justify, then you will give a generic examples, and the arguments in general can be of past, can be of future, or in present what is going on. So just understand this question very carefully. If the question is saying today, means this question is talking about contemporary time, not in general in the past or the future or like that. So contemporary time में आपको discuss करना है, and it is saying the need of the hour. Need of the hour का मतलब है the requirement of the given time. Means contemporary time is such that you need objectivity and dedication in civil services. I hope this is clear. In other words, you can say in contemporary time, if you bring objectivity and dedication in civil services, then the contemporary challenges will be solved. Means there are many problems. Understand this very carefully. There are many problems. If you bring dedication and objectivity, these problems will be solved. And if you are not bringing objectivity and dedication in the contemporary time, then the problem will persist, or there will be other challenges. I hope this understanding of the question is clear. So this question must be differentiated from other type of question, like simple asking the what is the need of the particular value. So try to understand what is the core demand of the question. Now come to the second keyword in the question that you must understand. This question is saying justify the statement. Justify means you cannot take counter perspective. Don't think every time you have to take the counter perspective. No, this question is about justify. You have to prove this. If you have to give the valid argument, you have to give the valid examples, then you will say hence proved, mathematics proper, this is justified now. You have to give that sort of conclusion. I hope so. By understanding these two phrases,
you will be in the better position to write this answer. So most of you has done this mistake. It's okay, doing the mistake is part of human behavior. Being human is an error. So anyway, now let us understand the structure of the question. Structure. First you will give the introduction. In introduction, don't go for defining the means defining only one value. Many of you have done this. किसी ने ऑब्जेक्टिविटी डिफाइन कर दिया है या किसी ने डेडिकेशन को डिफाइन कर दिया है. So my understanding will say, because this question is about justification, so your structure will be, see, just wait for a minute, I will give you better introduction. If you talk about the main body, don't take all those values together while discussing the need of the R, whether they are needed or not. Don't take it together. Give first heading that objectivity is need of the R, and give 1 2 3. Then not 1 2 3, you can go take it like this, that objectivity is need of the R. If there is objectivity, these will be the benefits. ठीक है, या contemporary following contemporary benefits can be seen, or in absence of the objectivity, these will be the problem. Then you will say कि if there is hence objectivity is the need of the R. Then next heading you will give that dedication is need of the R, the second heading. And you will say if there is dedication, if yes there is, if yes means if there is dedication, then following will be the benefits. Yeah, following problems can be solved, 1 2 3, and followed by examples. And then you will say if there is absence of dedication, the following problems persist. So that sort of 4 parts में आप इस आंसर को अगर आप डिवाइड करते हो, तो that will be a very good structure, I will say. Then in the conclusion you will write some things. ठीक है, अब आप क्या लिखोगे वो that I will give you the content. So I hope the structure part is clear. Okay, so today objectivity and dedication is the need of the R in civil services. Then you will say, आप रेफरेंस दे सकते हो नोलन कमेटी का, दैट नोलन कमेटी सेज देयर शुड बी some values that must be upholded by the civil services, and in contemporary time these values are all the more important given the present scenario. इस टाइप से आप कुछ rhetoric टाइप का बना सकते हैं. Then I will suggest you after introduction, because there are 3 pages and you might not be having that much content to write in that perspective. तो अगर आपका पेज खाली बच रहा है, तो for that you will suggest problems of the contemporary time in civil services. तो उसका एक स्कीमेटिक बना के यहाँ पे वो वाली चीजें लिख देना जो आप ऑब्जेक्टिविटी से सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पे वो वाली चीजें लिख देना जो आप डेडिकेशन से ठीक कर सकते हो. तो यहाँ पर आप ऐसे सोचिए, थिंक लाइक दिस, like you have written problem of contemporary time, then you are keeping it like this. You write 3 problems, or यहाँ पे write 3 problems. You can write nepotism, you can write political patronage में, ठीक है, and then you will write non compliance. ठीक है, तो जब ये 3 चीजें आपने लिखी, then here you can write solution with objectivity in decision making. Then here you will give again 2 3 points, and here you will write solution with dedication in working. Okay, so my point here is that, see, objectivity is about decision making. आपकी डिसीजन मेकिंग में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, जबकि डेडिकेशन इज अबाउट वर्किंग, कि आपकी जो वर्किंग है उसमें डेडिकेशन दिखना चाहिए.
सो आई होप दैट सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इज क्लियर, बिकॉज नेपोटिज्म डिसीजन मेकिंग में होती है, पॉलिटिकल पैट्रोनेज आपको दिखती है जब हम डिसीजन लेते हैं पोस्टिंग ट्रांसफर का, रिक्रूटमेंट में नेपोटिज्म इधर है ना, पोस्टिंग ट्रांसफर में पॉलिटिकल पैट्रोनेज चलता है और लोग डिसीजन नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सेप्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम आती है. सो ऑल मीन्स थिंक अबाउट द फार्म लॉ, पीपल हैव नॉट एक्सेप्टेड इट बिकॉज आपने देखा ना कि उनको लग ही नहीं रहा है कि डिसीजन ऑब्जेक्टिव तरीके से लिया गया है. इट इज बायस्ड टुवर्ड्स वन ग्रुप ऑफ पीपल. थिंक ऑन दोज लाइन. ठीक है. जब हम बात करते हैं कि डेडिकेशन में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है जिससे जो डेडिकेशन से सॉल्व होंगी, समटाइम्स रिजिडिटी ऑफ द रूल्स आ जाता है, रेट टेपिज्म आ जाता है ना, डिले इन डिसीजन मेकिंग हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि बीएलओ को आपने देखा होगा सुसाइड करते हुए. Okay, so BLO is committing suicide. Why? The work pressure is too much. If there is dedication, this person will accommodate and develop the aptitude. अपनी कैपेसिटी डेवलपमेंट करेगा so that this work pressure can be handled with dedication. है ना. There is problem of rigidity. I have already told you. There is a problem of lack of last mile delivery. So this can be solved with solution with respect to the dedication में, working में dedication. I hope if you draw this diagram with all possibility, examiner will give you marks by seeing this diagram only and level it properly. इसका नाम लिख दो. प्रॉब्लम आपने चलो यहाँ लिख ही दिया है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है. आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ आई विल गिव यू सम पॉइंटर्स कि आप कैसे लिख सकते हो. तो ऑब्जेक्टिविटी का बताना है, नीड ऑफ द आर. सो व्हाई इट इज नीड ऑफ द आर? बिकॉज इट विल इनहेंस एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द डिसीजंस. इस टाइप का आप आर्ग्यूमेंट दोगे. अब जब आप एग्जाम्पल दे रहे हो ना, तो ऐसा दिखाओ कि कंटेम्प्रेरी टाइम में ये प्रॉब्लम है. सो थिंक अबाउट दिस केस. इन दिस, fully aware of Great Nicobar project का impact, says center. See, land acquisition is a priority for the government to ensure that Great Nicobar project will happen and it will have multiple benefits. Okay, because see, it is saying the transshipment project, international airport, township, power plant, all the any development project when it comes, तो वहां पर conflict आता है. People are not ready. They says that my land will be taken up, my culture will be under threat. So all these things come up. When center is saying, read this passage or the para, it says the center added that no tribal person will be displaced or dispersed, noting that project will cover only 1.82% of the whole island archipelago. See, these are the objective facts government is giving, which amount to 18% of the Great Nicobar project is still leaving Great Nicobar Island with over 2/3 of its landmass as forest. And again, center also defended the environment clearance granted for the project, which has mandated detailed measures to study and monitor the biodiversity of the region as project is developed, calling it a live document, an alive document, and prescribes conservation measures till 2052. See, these are the objective facts government is giving कि भाई इतना ही impact हो रहा है, तो ambiguity खत्म हो गई. Otherwise, people keep speculating that why this is happening. है ना, कुछ भी टाइप का नहीं है कि कुछ भी हो रहा है. It is stated facts कि this will happen. Okay, so see, it is saying कि हम इतने दिन तक ये करेंगे. And here also, it says that we have conducted the study and the expert are being involved. ठीक है, तो ये सब चीजें आपको इसी it has said that making its argument before NGT bench, now hearing the matter, union government submitted that it had considered studies and research conducted over decades. See, this is the objective decision making. Objectively, they have conducted the study before mandating measures to translocate, conserve, monitor the project activity, impact on the biodiversity of the region.
So I hope this example giving you a sufficient understanding that how can you use these examples in very indirect question. And this is contemporary. This is need of the hour. That objectivity must be there. So you will show that there are gray areas. So gray areas में कैसे आप एक्सपीरियंस एक्सरसाइज करेंगे प्रैक्टिकल विजडम को विद ऑब्जेक्टिविटी. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एक्सेप्टेबिलिटी आएगी. दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी. एंड यू कैन ऑलवेज गिव द फॉर्म प्रोटेस्ट एंड फॉर्म लॉ को लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया. So all sort of argument. Second, you will say that if there is objectivity, the uh, perception of that decision is taking based on whims and fancy will not be there. Means there will be trust of the people. ऑब्जेक्टिव डिसीजन जब आप लेते हो ना तो परसेप्शन भी ठीक रहता है. Nobody can question you that this might be the case. That's why this person has done this. I hope so. Trust वाला जो aspect है that will be settled. For example, you can give contemporary example. ECI, Election Commission of India, is conducting SIR. So this Election Commission of India का जो procedure है, standard operating procedure, SOP, is very clear that these many documents I will take. With the intervention of Supreme Court, they added one more. That is, Aadhaar card is allowed. But the Election Commission of India has categorically said that although we are checking the citizenship, but we are not conducting not deciding whether you are citizen or not. We are just saying ki because citizen can only vote, that's why we are asking you the proof of citizenship. So that sort of clarity is there. A standard operating procedure hai ki these many documents, this form you must fill. It should be in 2002 or 2003 की voter list में. ठीक है. If you are not, then and somehow you have been kept out of the new list, then there is mechanism of appeal. You can approach the chief election officer and ask him that I have been replaced from this. So many times you see the opposition party leader or here and there, due to the political nature of the situation, they keep on asking that okay, this is happening, that is happening, but officially they have not filed any grievances before the Election Commission of India. And the very successful example is of Bihar. कि बिहार में I think most means the list was finalized and many people were out of the list. So nobody has appealed before the chief election officer that I have been with malified intention kept out of it. So it shows that with objectivity you will gain the trust. And with the success of SIR in Bihar, it has been implemented in other parts of India. So you will say objectivity is, that's why it is required. Third, nowadays you all see that recruitment जब होता है, so there are allegations that paper has been leaked, somebody has been favored. So for objectivity, what they have done, think about the UPSC. For this prelims, from this prelims, they will go for the facial recognition technology. So very objectively, they will be verifying the same person is filling the form, same person is appearing in prelims, mains, and interview. So this objectivity will create a form of trust, or you will say a perception will be managed. Okay, I hope this is clear. Means it is objectivity is required to facilitate the transparency. So transparency, because trust वाले aspect को मैंने यहाँ ले लिया, so you can say the transparency aspect. तो clarity रहेगी लोगों में. Next, why objectivity is required? Think about the data. आपको मैंने डेटा पे कई सारी चीजें बताई थी कि whether data is available or not available, how much too much data is available, है ना? Then I have told you the conflicting data is available. So think or leave all these things aside. These can be opened for writing the argument. But think,
Nowadays it is said that data is a new oil. New oil. If data is a new oil, see, again and again I am linking with the contemporary and today's scenario. Data is a new oil, and for making objective decisions you must take data into account. So if data is available in that much quantity and it is very readily available and considered as new oil, so you have to take objective decision. Days are gone when there was no data and based on the perception or based on the understanding you might take decisions. But now data is available, readily available. So taking decisions based on data is required objectivity. आप डेटा को रख के विदाउट ऑब्जेक्टिविटी के डिसीजन नहीं ले सकते हो. So I hope this is clear. So I have told you about acceptability, the trust, the recruitment में transparency, the data aspect. Again think about the posting and transfer. If there is posting and transfer में objectivity है, तो what benefit you will derive? The morale of the personnel will be high. There will be non-partisanship. Every officer will think that I have been given this place just because I deserve it. I am meritorious enough. तो वो एडिक्वेट उनको एडवाइस देगा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को. Okay, so this objectivity is required in personal management. So these many examples you can give, and you will say if there is lack of objectivity, then you cannot counter the superstition. There will be challenges of prejudice. I have given all these examples. I have given prejudice में मैंने आपको example दिया था that the girls eating job of man 99% racism वाला एग्जांपल दिया था. इफ यू हैव टू काउंटर, अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं हो देन हाउ कैन यू कन्विंस. सुपरस्टिशन, वैक्सीन हेजिटेंसी को दूर करो, कैसे करोगे जब तक आपके पास ऑब्जेक्टिव फैक्ट नहीं होंगे दिखाने के लिए दैट दीज मैनी ट्रायल्स हैव बीन कंडक्टेड. आई होप नाउ you are getting the hang of the answer how it should be written. So when I asked examine the relevance of objectivity, that is very direct question. And nowadays, such questions with all possibility will not be asked. If we see the trend of 2024, in all the questions you have to think and write. If you are not bringing such kind of aspects, at least in the 50% of the question, तो फिर you will struggle to get better marks. So read the question very, very carefully. Direct questions. That's why 2 days, 3 days I have taken to warm up. Direct question. Examine word पे ही आप फंसे रहे. Anyway, so it is a part of learning and it is all okay until you are learning. Anyway, so now move to the, see, in all these points I have shown you that why decisions are being made, objectivity is required. That sort of clarity must be there कि decisions में objectivity होती है, working में objectivity नहीं होगी. Working में आपको you need like a dedication. So let us talk about working and dedication. So first of all I will tell you what are the contemporary scenario nowadays where requires dedication. You all know in the last budget government say the honorable finance minister has talked about the saturation approach. She said कि India has achieved multiple milestone, but saturation is still something we are lacking. So she talked about something called the tribal areas. कि ट्राइबल एरियाज में अभी भी जो हमारी स्कीम्स हैं उनके बेनिफिट्स नहीं पहुंच रहे हैं. सो एन स्कीम वाज लॉन्च, द प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी ग्राम उत्कर्ष अभियान, such sort of some scheme was there that is called प्रधानमंत्री JAGDUA. ठीक है, so that is the name of the scheme. प्रधानमंत्री धरती आभा जनजातीय गौरव उत्कर्ष अभियान, सही ग्रामीण उत्कर्ष अभियान, इस टाइप से कुछ है. So the objective of this scheme is saturation. So dedication is required
when you have dedication, then only you will tolerate the diverse culture. ये मैंने आर्ग्यूमेंट कल भी दिया था, आज भी दे रहा हूं. But today you will say that in the need of the hour is saturation, because हमने ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है. That's why we need a saturation. Oh, sorry, because saturation is the target, that's why we need dedication. With dedication comes tolerance. So implementation of this scheme, sort of example you can write. You can bring Gandhi. Inclusive growth is the objective. So Antyodaya से आप जोड़ सकते हो. Again you will say the going extra mile, because nowadays the rules cannot become the end. Focus of the government is thinking about the effectiveness, bringing visible change in the life of the people. All these arguments I have given again and again, I am just repeating. So thinking about the going extra mile and effectiveness ke liye, so you need dedication to handle the next. You see, nowadays what is happening, see, again and again I am linking what contemporary themes are going on, the contemporary challenges the world is facing. If you have attended our discussion of artificial intelligence possibilities and challenges, ये वाला एक topic था essay का, so you must be aware that I told you one introduction that was related to the Friedman, Thomas Friedman. He says that the present age is the age of acceleration. In this, the technology, the climate change, and third one, all these three things. I think the technology, the climate change, and one more was there. So he said that these things are changing very rapidly. Okay, so if these things are changing very rapidly, I'm not able to recall the third one. Anyway, you can refer to that discussion. So if these things are changing very rapidly, so what is required for the civil servants? For civil servant, this requires some sort of adaptability, that you must adapt to the changing requirements of the people. The concept of development is evolving, because development as a concept is a dynamic one. So they need adaptability with changing needs. Now Gen Zs are there. Everything is going online. We are thinking about the orange economy. So if there is no dedication, the adaptability will not come. And second, because it is an age of acceleration, everything is changing very rapidly. So I told you that we need continuous learning, skilling, reskilling, upskilling. Think about Mission Karmi Yogi, to develop the domain expertise. So if you are not continuously guided by Yoga Karmashu Kausalam, again and again, daily basis, I am recalling it and revising it, making you understand. But rarely I find anyone using this Yoga Karmashu Kausalam in his or her answers. So that sort of dedication is required. I hope now it is clear. The dedication is also required because such kind of adaptability is required. So there will be job pressure. Because the governance is getting complex, that can be the next argument. Because governance is getting complex, तो उसमें job pressure होगा. We have 146 billion people. BLO देखो suicide कर ले रहे हैं. With all concerns to these people, but everyone has not committed the suicide, because they might be having dedication. You can use in that manner, and it can be interpreted in multiple ways. So don't come to me and say what you are saying, he has committed the suicide or something wrong because he was facing mental trauma. With all my personal experience, I find this is very subjective. One thing can be trauma for one, other can be warm up for other. So warm up and torture ka combination. So the BLOs, I think, should be given all the related training, so they develop some sort of mental resilience, I will say. So this is a collective failure, but anyway, you can use in that manner one sentence.
always can be interpreted in multiple ways. Again, you can say the government is focusing on new welfareism. New welfareism. This is all you can write in the governance answers. गवर्नेंस का कोई अलग से कोर्स नहीं आता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड थिंक. न्यू वेलफेयरिज्म, क्या हो रहा है न्यू वेलफेयरिज्म में? दे हैव टू प्रोवाइड सब्सिडी, सिलेंडर उज्ज्वला में. ओके, सो फॉर दिस थिंक अबाउट द मुद्रा. आई हैव गिवन द एग्जांपल, जिसमें लोन दे रहे हैं, ड्रोन दीदी. सो ऑल दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू वेलफेयरिज्म. तो इसमें क्या है कि टारगेटेड बेनिफिशियरी को हम पैसा देते हैं. Okay, so again, for doing all this you need dedication. One size fit all will not work. Okay, so these many examples I can I can say that will be making sense to all of you. Okay, next, see, the next question is about the circumstances that create suspicion among the people for civil servants. See, what are the circumstances that create suspicion about the officer's integrity? So here you can write each and every allegation, because this question is about suspicion. शक तो किसी के भी कर सकते हैं, है ना? You can can doubt anyone. Suspicion has no cure. You can doubt anyone. तो यहाँ पे जितने भी एलिगेशन के केसेस हैं उन सब में आप उन सबको यूज कर सकते हो, बट यूज अलिजिडली. ये वर्ड यूज कर लेना, उसके बाद कुछ भी लिख दो. ठीक है, तो व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस दैट क्रिएट. तो इसमें आप लोगों ने अच्छा आंसर लिखा है मोस्ट ऑफ यू, एंड बट आई विल सजेस्ट यू कि इसका एक फ्रेमवर्क बना लो, दैट विल हेल्प यू. अच्छा हाँ, इसका एक कंक्लूजन और देख लो, व्हाट विल बी इन द कंक्लूजन. सो यू विल गो फॉर दैट हाउ वी शुड ट्रेन अवर personnels or the officers or the officers and the civil servants so that they develop objectivity and dedication. इस पे हम काम कर सकते हैं, and you can always give the examples, the socialization वाले aspect से link कर सकते हो. So let us move to the next question. It is about what are the circumstances that create suspicion about the officer's integrity. So divide it into the 3-4 parts. What he is doing personally. ठीक है, पर्सनल लेवल पे ये क्या करता है, और प्रोफेशनल लेवल पे ये क्या करते हैं. देन यू कैन थिंक अराउंड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट. ठीक है, देन यू कैन थिंक अबाउट द प्रोसीजरल एस्पेक्ट एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट. ठीक है, या हम कहें कंडक्ट कैसा है, बिहेव कैसे कर रहे हैं, उस पे आप देख सकते हो. सो लेट अस थिंक द पर्सनल कंडक्ट में आप ऐसे समझोगे कि व्हाट इज हिज लाइफ स्टाइल. क्या लाइफ स्टाइल जो उनको इनकम मिल रही है या जो सैलरी मिल रही है उससे अलाइन हो रहा है. इफ इट इज नॉट, देन सस्पिशन कैन बी देयर. सस्पिशन जो वर्ड लिखा है ना, इससे ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया. वहां पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. यू कैन सस्पेक्ट एनीवन. इस टोन से चलना. सो लाइफ स्टाइल में आपका इनकम और लाइफ स्टाइल में जो आपके बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस अगर दिख रहा है, देन यू कैन थिंक. सेकेंड, द क्लोज एसोसिएशन विद हाई रिस्क इंडिविजुअल्स. हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मिडिल मैन हैं. सो डोंट राइट दिस इन द आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट में इनको कॉमन नाम दो, फिर एग्जाम्पल्स में इनको लिखो एंड गिव दैट सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स. देन प्रोफेशनल लेवल पे सोचो. इफ प्रोफेशनल लेवल पे द डिसीजन लेते हैं, अगर देयर इज अनड्यू डिले और हेस्ट without justification, then you will create some kind of doubt or a suspicion. If decision is getting selective, think about the Supreme Court. Many people says Supreme Court is very selective in taking the cases. Arnav Goswami का केस होता है तो that is he is getting bail then and there, and the cases keep lingering for years. मैंने अभी आपको एक केस का दिखाया था. थिंक अबाउट द निठारी केस ओनली, वेरी recent one, because the victim were, it is said suspicion, because victim were
the marginalized section. So selective decision making. If this person is not taking any steps for probity in governance, with all due respect, think about ex Prime Minister Manmohan Singh. His tenure was alleged for being the problem of policy paralysis. At the individual level, he was very honest, but somehow he failed. Uh, right, like that, allegedly he failed to create effective checks and balances in the system so that system cannot be misused and there is no policy paralysis. So like that you can write. And for the example of this, the uh, unusual haste or delay में आप लिख सकते हो, see how parliament is doing that. Parliament में think about JNK Reorganization Act or the Farm Bill. These are passed just 1 hour of discussion. How is it possible? So rather than giving the personal example, you just write passage of bill in the parliament without due scrutiny. Create suspicion among the people with respect to the integrity. Okay, the professional level pe read this case study. I will give you one better example. There, this is asked by UPSC and by the UPPCS also in 2018 and 2013 में UPSC ने पूछा था. PIO has received an application under RTI. Having gathered the information, PIO discovers information pertains to some decisions taken by him which were found to be not altogether right. इसने decision लिया, वो altogether right नहीं है. There were other employees also as were party in the decision. Disclosure of the information likely lead to the disciplinary action and possibility of the punishment against him as well as some of his colleagues. Non-disclosure or the part disclosure and the camouflaged disclosure of the information. Use this word non-disclosure, part disclosure, camouflage disclosure of the information will result in lesser punishment, no punishment. PIO otherwise honest. ठीक है, conscientious person means man of conscience, but this particular decision, except this decision on which the RTI has been filed, turned out to be wrong. He comes to you for advice. Rather than giving all this, reading entire case study, just think कि there is a PIO, इसने कुछ डिसीजन लिया था, अब यही बंदे के पास RTI लगाई गई है. ही इज अ डिसीजन मेकर, नॉट DM, डिसीजन मेकर. अब RTI लगाई है, यही PIO है. तो अब बताओ कि इसको ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए या नहीं. नहीं देगा तो उसको पनिशमेंट भी कम मिलेगा. वैसे ही जनरली ऑनेस्ट है, अच्छा है, सब कुछ है. तो ऑप्शंस क्या हैं? PIO could refer the matter to the superior officer and seek the advice to act strictly in accordance with the advice. लीव पे चला जाए और लीव के अपने सक्सेसर को बोले भाई तुम देख लेना. could weigh the consequences और consequences के हिसाब से. तो leave all things aside, what I am trying to say in this particular case study is that अगर ये PIO honestly disclose कर भी दे, then only people will say नहीं यार कुछ तो इसने छिपाया होगा. Because this person has taken the decision, now he is disclosing. तो conflict of interest आ रहा है. This conflict of interest वाला जो aspect आता है, ये अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, ये अगर PIO ये कहते बिकॉज माई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हमने डिसीजन लिया था, अब RTI आई है तो हम नहीं डिसाइड करेंगे, तो ये सस्पिशन में नहीं आएगा. तो इफ ऑफिसर इज नॉट डिस्क्लोजिंग हिज और हर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देन देयर विल बी सस्पिशन. सो दिस कैन बी एन अनदर आर्ग्यूमेंट. ओके, सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आप एक डायमेंशन बना सकते हैं प्रोफेशनल कंडक्ट में. अगर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, सो देयर विल बी सस्पिशन. एंड ये मैंने आपको इसलिए केस स्टडी दिखा के बता दिया कि इस टाइप में आपको जब डिसीजन लेना हो ना, जहाँ पे आपने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया हो, आप डिस्क्लोज करना हो, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला एस्पेक्ट को जरूर टैकल करना. ऐसी केस स्टडी रिपीट हो सकती है. देन कम्स द फाइनेंशियल एस्पेक्ट कि उसमें कैसे ऑफिसर को सस्पिशन से देखा जा सकता है, इंटीग्रिटी को उसकी. तो अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ये जो मैंने आपको यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल दिया, ये इन जनरल मैंने दे दिया. यहाँ ऑफिसर की बात हो रही, तो आप लोकपाल की बात कर सकते हो कि जो हमारे लोकपाल हैं उनके ऊपर भी सस्पिशन आ रहा है, बिकॉज ही हैज़ केप्ट द थिंग्स रिजिड कि भाई ये आप इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए. बिकॉज देयर वाज वन न्यूज़
कि आई थिंक 45%, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द परसेंटेज, कि इतने परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिए हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं फॉलो किया था उन्होंने, वो फॉर्मेट नहीं फॉलो किया था जिसमें एप्लीकेशन दी जाती है. सो दैट इज फोकसिंग मोर ऑन द पेरीफेरी नॉट द कोर. सब्सटेंस पे फोकस नहीं हो रहा है, दे आर फोकसिंग मोर ऑन द प्रोसीजरल एस्पेक्ट. तो वो प्रोफेशनल डोमेन में आप लोकपाल का एग्जाम्पल दे सकते हो. ठीक है. तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में अगर आप देख रहे हो कि बेनामी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है इस आदमी के पास, या ऐसे कोई एलिगेशन लगते हैं बेनामी प्रॉपर्टी वाले. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर छगन भुजबल. तो इस मिनिस्टर को आप नाम कोट कर सकते हो बिकॉज सस्पिशन है ना. तो एलिज्ड अलेज्ड बेनामी ट्रांजेक्शन और बेनामी प्रॉपर्टी का इनके पास मिला है और ईडी ने इन पे रेड की है. तो दैट सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट यू कैन गिव. फाइनेंशियल में आपके पास डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स का केस हो सकता है. फॉर एग्जांपल अलेज्ड, अलेज्ड वर्ड जरूर यूज करना. अलेज्ड गंजम डिस्ट्रिक्ट में एक जो बीजेडी के लीडर हैं उनका आप नाम लिख सकते हो. डोंट राइट द नेम, जस्ट राइट द डिजिग्नेशन. तो डिस्प्रोपोर्शनेट असेट केस में इनका, और एक पंजाब के डीआईजी का अलेज्ड वर्ड जरूर लिख देना बिकॉज अभी प्रूफ नहीं हुआ है. ठीक है. तो ये हो गया फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे. देन यू थिंक अबाउट द प्रोसीजरल एस्पेक्ट. प्रोसीजरल एस्पेक्ट में इफ समबडी इज वायलेटिंग द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, वायलेटिंग द रूल विदाउट रिकॉर्डेड रीजन, ये आप कैविएट जरूर देना. विदाउट रिकॉर्डेड रीजन हो सकता है वायलेट करना पड़े रूल को, जैसे मैंने आपको बताया था यूबीडीटी के केस में अनबैंक्ड डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ठीक है. यूडीबीटी, ठीक है, हाँ, अनडायरेक्ट, सॉरी, यूबीडीटी मीन्स अनबैंक्ड डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन. यस, अनबैंक्ड डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन. तो वो आप ब्लड बैंक से ब्लड ला के नहीं कर रहे हो, बट सिचुएशन ऐसी थी कि आपको मरीज की जान बचानी थी एंड यू हैव टेकन दैट डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन अनबैंक्ड वाला. तो वहाँ पे आप रूल को वायलेट कर रहे हो, बट यू मस्ट रिकॉर्ड द रीजंस वहाँ पे कि हमने ये स्टेप लिए, उसके बाद आई हैव टेकन दैट डिसीजन एंड आई प्लीड गिल्टी इफ आई हैव डन दिस टू सेव द लाइफ ऑफ द पर्सन, बिकॉज हायर पर्पज के लिए आप कर रहे हो. तो अगर रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो आप रीजन, तो इट विल क्रिएट सस्पिशन कि आपको पता है लेकिन फिर भी आप रूल्स को वायलेट कर रहे हो और रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे हो टू अवॉइड द अकाउंटेबिलिटी सॉर्ट ऑफ थिंग. क्योंकि आप रिकॉर्ड करोगे तो आप अकाउंटेबल हेल्ड करे जाओगे. मीन्स इट इज शोइंग दैट यस आई हैव डन समथिंग आउट ऑफ रूल बट दिस इज द रिकॉर्डेड रीजन, दैट्स व्हाई आई हैव डिड. तो जस्टिफिकेशन वाला एस्पेक्ट. ठीक है. देन थिंक अबाउट द प्रोसीजरल एस्पेक्ट में, अगर वो हैबिचुअल है ऑफ वायलेटिंग द हायरार्की, मीन्स सी देयर इज अ डायरेक्टरेट जनरल डीजी एंड नीचे उसके एडीजी होते हैं एंड उसके नीचे we have in the hierarchy called the DDG, or Deputy Director General, Additional Director General, and Director General. And there comes the Director. This is the broad hierarchy. If Director is again and again leading to this level or direct to the DG, means it reflects that there is a nexus between DG and Director. These two officers are being bypassed. तो अगर इस टाइप का हो रहा है then it will create some sort of suspicion. ठीक है. जैसे let it be, I will not elaborate more anyway, so you can go with that sort of example. Then comes behavior में आपका ethical conduct दिखना चाहिए. ठीक है. so behavior में ethical conduct कैसे दिखेगा? Then again you will think about that if behavior is not ethical, means the person is not going extra mile. फॉर एग्जाम्पल झारखंड में वो 12-year-old जो गर्ल है उसका डेथ हो गया, या पीडीएस ऑफिसर का एग्जांपल ले लो. यू कैन गो फॉर एनी एग्जांपल जहाँ पे भी इथिकल कंडक्ट ये नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी सस्पिशन होगा. मीन्स माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू एक्सप्रेस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट डिवाइड इन दीज पार्ट्स. और इनके अंदर आप एक दो पॉइंट कम ज़्यादा भी लिखोगे देन इट्स ओके. मीन्स इट रिफ्लेक्ट्स दैट यू आर थिंकिंग इन पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, और दैट इज अप्रिशिएटेड while writing the answers or while examiner evaluate that. I've taken this one copy. See, in this copy, it is objectivity and dedication to public service is required, grammatically not correct, for effective public service delivery in today's world marked by the political pressure and social media influence. Anyway, she has taken two aspects that why we need objectivity and dedication. So, okay, I will say, fine, the objectivity going to define can need with justification. Very good headings. अब see, यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्टिव नीड इन द सिविल सर्विसेज. सो दिस इज नॉट आस्क्ड. व्हाट इज आस्क्ड? द नीड ऑफ द आर. सो देयर इज अ डिफरेंस नीड और नीड ऑफ द आर में. शिफ्ट फ्रॉम
स्पॉइल सिस्टम, सी इन जनरल आप डिस्कस कर रहे हो कि स्पॉइल सिस्टम से शिफ्ट हो गया, तो नाउ अडेज क्या, स्पॉइल सिस्टम से तो हमने बहुत पहले शिफ्ट कर लिया था वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी में। सी स्पॉइल सिस्टम, वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इथिकल ब्यूरोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड वाला। सो वी हैव ऑलरेडी शिफ्टेड हियर, हमें यहाँ से यहाँ की तरफ जाना है, बट वी नीड दिस इंपॉर्टेंस। यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिविटी की तो जरूरत है ही, भले ही हम कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी वेलफेयर स्टेट की बात करें। आई होप दिस इज क्लियर। जेम पोर्टल टू एलोकेट द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, अरुणा सुंदरारन, बट दैट वाज नॉट शेयर ऑब्जेक्टिविटी। यहाँ पे आप कंपैशन की तरफ जा रहे हो, इनोवेशन की तरफ जा रहे हो। क्वेश्चन इज नॉट अबाउट दैट कि ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको वो प्रूव करना है कि फैक्चुअल डिसीजन मेकिंग हो रही है, वो भी अच्छा है। आई होप समझ आ रहा होगा। लीड टू रिडक्शन इन द करप्शन, ये सही है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट, दिस इज आर्ग्यूमेंट, एग्जाम्पल नहीं है ये। ऑब्जेक्टिविटी से करप्शन कम होता है तो उसका आप एग्जाम्पल दो। आई होप अभी समझ आ रहा हो कि एवरी टाइम यू विल बी ऑब्जेक्टिवली असाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट टू द L1 बेंडर, मीन्स जो लीस्ट वन होगा उसको आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे। अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, रिसेंट पॉस्को जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो भी ऑब्जेक्टिविटी के अगेंस्ट था। यू हैव मिस्ड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, प्लीज। अपहेल्ड द रूल ऑफ लॉ, SOP ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फंड इन द मुद्रा योजना, यहाँ पे लिखो टू सिलेक्ट द बेनिफिशियरी अंडर द स्कीम, अंडर द न्यू वेलफेयरिज्म, उस टाइप का कुछ दो। आई होप दिस इज clear to you, so please improve in that. However, the sheer objectivity lead to, see, ये नहीं लिखना है in this question, you have to justify कि भाई ये है। okay, so don't add these aspects. आप in conclusion बोल सकते हो that sheer objectivity should not be there, but better will be how to inculcate। ठीक है, डेडिकेशन में जस्टिफिकेशन, इट प्रोवाइड्स मोरल एंड इथिकल लीडरशिप, ठीक है। NHI, सी आप वही बता रहे हो कि जरूरत क्यों है। नीड ऑफ द आर वर्ड जो था ना वो आपने मिस कर दिया, एनीवे आप इंक्लूड कर लेना उसे। एंड देयर कम्स द इंटीग्रिटी मींस अडेरेंस टू द मोरल इथिकल स्टैंडर्ड, ठीक है आपने बता दिया। सर्कमस्टेंसेस क्या है, क्लोज एसोसिएशन विद दिस, एग्जांपल इज मिसिंग, यू कैन गिव एनी, आप कॉमन नाउन में एग्जांपल दे दो, जनरल नहीं, आपको स्पेसिफिक नहीं पता तो। इम्पार्शियल एटीट्यूड ऑफ द सिविल सर्वेंट, नॉन पार्टीशन, दीज आर द पॉजिटिव थिंग। अगर नॉन पार्टीशनशिप है तो अच्छी बात है ना, फिर तो इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं होगी। यहां लिखो लैक ऑफ नॉन पार्टीशनशिप, इम्पार्शियल एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट, बायसनेस इन, तो इम्पार्शियल तो अच्छी चीज है, पार्शियल होता है खराब। तो प्लीज वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। मेजर्स टू अपहोल्ड द इंटीग्रिटी, not that much space is required, just in one box you can write, or in conclusion you have to give, justify करना है। means what is the question, yeah, what are the circumstances, तो circumstances चार पार्ट में डिवाइड करके लिखोगे, then you have lot many points to write। again next this copy is civil servants are guided by the principle of yoga karma sukha kausalam, that is very good, very good। you have brought that, people's welfare in the civil servants responsibility, objectivity and dedication is the need for it, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, need of the hour, see this sort of the heading should be there, why objectivity is the need of the hour, objectivity rules out subjectivity, very good, promotes decision on merit, objectivity conducts promotes rule based decision making, good। so for that example highlight कर दो भाई, रिमोट, ठीक है ये अच्छा लिखा है। वाई डेडिकेट, यहाँ पे आप ना फ्लिप साइड वाला भी बता दो कि होगा तो ये सब अच्छा है और नहीं होगा तो ये नेगेटिव है, एटलीस्ट 1-2 you can। dedication is needed to provide the proactive, means this person is revising, that's why these points are coming। lead to the public service delivery, difficult situation, ठीक है, good good good, very good। and conclusion क्या लिखा, it can be stated that objectivity and dedication in the civil servant is needed to uphold the good governance, very good, आपने कीवर्ड ला दिया, that is required। इंटीग्रिटी इन अपहोल्डिंग मोरल एंड, या ठीक है इंटीग्रिटी आपने बता दिया क्या है। सर्कमस्टेंसेस, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, ठीक है। एग्जांपल दे दो, 90 डिग्री ब्रिज, तुरंत आएगा एग्जांपल। ये क्या लिखा, इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन द पर्सनल वैल्यू एंड द प्रीजुडिशियल, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट इट इज, एनीवे, एक्सप्लॉइटिंग लूप होल्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो आपने अच्छा लिखा है, बस ट्राई करो कि उसको क्लासीफाई कर दो उन पार्ट्स में। एंड कंक्लूजन, इंटीग्रिटी इज अ स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक लाइफ, नोलन कमेटी, गुड गुड रेफरेंस, वेरी गुड विनीत।
I'm happy. You are writing good. So thank you. This is all from my side. If you have any doubt and anyone wants to have a look on their copy, I will do that. And with all possibility, I will give some comments on the Telegram channel itself. Despite that, doubts remains, please reach out. I'm open to that. Thank you.